हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। तो आज एक नई गेम शुरू करने वाले हैं, बायोम्यूटेंट, जो कल ही रिलीज़ हुई है। कल 10 बजे रिलीज़ हुई थी, मेरे को ध्यान नहीं रहा था, 11-12 बजे मैंने फिर डाउनलोड करी है उसको। तो अब डाउनलोड रेडी है, तो अभी गेम लॉन्च करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि लास्ट ऑफ अस जो है वो अभी चल रही थी, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, वो भी थोड़ी सी बची हुई है। तो मैं या तो दिन में 2 स्ट्रीम्स करूँगा, अभी करूँगा थोड़ी देर, और उसके बाद ब्रेक लेके थोड़ी देर बाद लास्ट ऑफ अस की करूँगा। अगर मैं नहीं थकता तो अगर मेरे को ज़्यादा लगता है टायरिंग ये सब, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ऑल्टरनेट डेज करूँगा, एक दिन बायोम्यूटेंट, एक दिन लास्ट ऑफ अस। तो या तो मैं ऐसे करूँगा, देखूँगा जिस चीज़ में मुझे कंफर्टेबल लगेगा तो मैं वैसे करने वाला हूँ। पीएस पर खेल रहे हैं ना? नहीं यार, पीसी पे खेल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो गेम की शुरुआत में आई थिंक एक सिनेमैटिक है, इसलिए मैंने गेम इस बार स्ट्रीम से पहले ही शुरू नहीं करी है। अब शुरू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैंने थोड़ा सा गेम चलाया था, ज़्यादा नहीं, जस्ट गेम ऑन किया था। मेरे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा उसके अंदर। तो अब आई थिंक स्टार्ट करते हैं। न्यू गेम ही स्टार्ट करूँगा। हाँ, 1 सेकेंड। यस, हो गया बैक। गेम बहुत ही अच्छी गेम है। आई विद काइंड ऑफ लाइक अ ब्लेंड बिटवीन डार्क सोल्स और जेल्डा, क्योंकि गेम प्ले पूरा जेल्डा जैसा है, लेकिन इसका गेम का मैकेनिक जो है, मतलब हम बिल्ड बना सकते हैं इसमें अपना खुद का। तो उस टाइप की गेम है। तो वो चीज़ इन्होंने शायद डार्क सोल्स वगैरह जैसी गेम से उठाई है। और जो गेम प्ले है वो ऑलमोस्ट लाइक जेल्डा जैसा है, मे बी डार्क साइडर्स जैसा है। तो वो अभी खेल के ही पता लगेगा, ज़्यादा कुछ तो पता लगा नहीं है गेम के बारे में। साहिल भाई, हमको भी खेलनी है, ये एक्सेस दे दो वरना हैक करवा दूंगा कब। ये आशीष भाई ने भी ले ली है, उनके उसमें भी है। आई डोंट नो व्हाई माउस दिख रहा है मेरा इसके अंदर, मे बी इन गेम माउस ही है ये। मैं हटा देता हूँ। ये हमारा कैरेक्टर होगा, लेकिन हम जैसे जैसे इसके एट्रीब्यूट सिलेक्ट करेंगे वैसे वैसे ही चेंज होगा उसी हिसाब से। मैं एक बार जस्ट इसकी एक सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, कैप्चर कर्सर वाली। कर्सर इस वजह से दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। ये तो ट्रेलर में ही था आई थिंक, ये चीज़ तो मुझे लगा इसमें कुछ नया होगा। How can something as beautiful as this be dying? A plague is ruining the land, but the tree of life still stands. Question is, for how long? End is coming to the अब ये तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का कुत्ता है। tribes हाँ, stand वैसे ही divided, दिखता है in ये। need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. Welcome to Biomutant. तो न्यू गेम ही करते हैं। मीडियम पे खेलता हूँ, हार्ड पे नहीं, वरना फिर वो ये रिट्राइज होता रहेंगे और गेम थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। आई एम ग्रूट दूसरा होता है, ये रकून है होता है, वो रकून होता है। तो मीडियम पे खेलते हैं इसको, हार्ड पे नहीं खेल रहा। ये आवाज बिल्कुल वैसी लग रही है होराइजन जैसी। उस पे जो वॉचर्स है वो शायद ऐसी सी आवाज करते Encode हैं। your DNA. ओके, सो मेरे पास से ऑप्शन है कि किस तरीके की ब्रीड है।
तो एक ये प्राइमल ब्रीड है जिसमें मेरे को एनर्जी रीजनरेशन ज़्यादा मिल रहा है और लक ज़्यादा मिल रहा है। फिर एक ये डम डाउन है, ये तो डम सा लग रहा है लेकिन इसमें इसकी की एनर्जी ज़्यादा है, मेले डैमेज ज़्यादा है और हेल्थ ज़्यादा है। स्ट्रीम पर है, स्ट्रीम पर है कि नहीं? स्टीम पर ही है ये। रेक्स में इसकी हेल्थ ज़्यादा है और इंटेलिजेंस ज़्यादा है। इसमें इसका आर्मर ज़्यादा है, हाइला में इसमें थोड़ा खतरनाक सा दिख रहा है। एंड इसमें इसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है फिप वाले में, लेकिन बहुत बड़ा गंदा सा दिख रहा है ये। हाँ स्टीम पर है, स्टीम पर है। और लास्ट है हमारा मुर्गिल, इसमें सब कुछ ही कम है, बस करिश्मा और लक ज़्यादा है। सो सबसे कूल तो जो लग रहा है वो मुझे रेक्स या फिर हाइला में से लग रहा है, लेकिन हाइला की सिर्फ हेल्थ ही ज़्यादा है। तो आई थिंक मुझे रेक्स लेना चाहिए, उसकी पावर भी ज़्यादा है, की एनर्जी भी ज़्यादा है, लक भी ज़्यादा है, तो मैं आइटम भी ज़्यादा, क्रिटिकल चांस ज़्यादा है। मुर्गा ले लो। मुर्गल नहीं अच्छा लग रहा ना, मुर्गर में करिश्मा और लकी है बनाकर खा। अच्छा मुर्गा, मुर्गे, ये वाला सही लग रहा है एट्रीब्यूट्स के उससे। हीला, हाइला, हाइला लेते हैं। हाइला, इसकी हेल्थ ज़्यादा है ना, बाकी सब चीज़ें तो, और डैमेज भी ज़्यादा है इसका, और दिखता भी गुस्से वाला है, तो ये वाला लेते हैं, थोड़ा बैडएस सा। Define your genetic structure. तो फुल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस पे भी जा सकते हैं। मंडी 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 करके कुछ भी ले लो। हाँ कर रहा हूँ। तो इसको बीच में डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, एकदम बराबर, हर चीज़ बराबर, कुछ छेड़ेंगे नहीं। अपीयरेंस थोड़ी चेंज हो रही है लेकिन हर चीज़ में इसकी ना, तो मैं एजाइल और स्ट्रेंथ वाला बनाता हूँ, थोड़ी एजिलिटी हो और स्ट्रेंथ भी हो, तो दोनों का बीच का बना लेता हूँ। Choose a genetic resilience. रेजिस्टेंस मैं सब में ही बराबर दे देता हूँ, ऐसा नहीं कर रहा कि मैं सब में ज़्यादा दे दूँ, इक्वल रखते हैं। Choose your fur style. अब ये क्या है? ओके, फर का स्टाइल है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि क्या फर का स्टाइल होगा ऐसे, बट ये वाला कूल लग रहा है, गॉड ऑफ वॉर टाइप सा। इसमें अगर सिर्फ एक ही साइड वो लाइन हो तो मजा आ जाए, बट एक साइड है नहीं। रैंडम करके देखो एक बार, 3-4 ही हैं इसमें, ज़्यादा वो है नहीं। ये वाला ले Pick your लेते main हैं। color. ओके, तो मैं इसको ब्लैक कलर का बनाता हूँ, तो ये वाला वाइट ले लेते हैं। हमारा रकून काला होगा। Choose your detail color. अरे लेकिन यार इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। Pick your main color. इसको रेड कर लेते हैं। Choose your detail color. ओके, डिटेल कलर चेंज नहीं हो रहा है। कलर तो कोई भी रख सकते हैं। आई थिंक मेरे को ये रेड रखना चाहिए, Pick your main और color. पीछे वाला येलो। Choose your detail color. आई डोंट नो यार, Pick your main color. ये बहुत अजीब हो गया अब। Choose your detail color. ये रख लेते हैं, Pick a class. ऐसा सा रखते हैं अब, रेड ब्लैक। Choose your detail color. लाइंस ब्लैक कर देता हूँ, Pick your main color. और Choose your detail color. ये रेड कर देते हैं। गो अफ्रीका, पूरा काला नहीं कर रहा मैं, ऐसा कर देते हैं। Pick a class. ओके, सो क्लास है इसमें मर्सनरी, ये थोड़ी समुराई टाइप है। Deadeye. फिर डेड आई, स्नाइपर, Mercenary. melee dual wield skill, equip 2 different one-handed weapons to dual wield them,
और फ्यूरी melee weapon attacks inflict 10 more damage to the target. Deadeye. Your range weapon are reloaded instantly and your next magazine is granted 20% damage. Commando. थर्ड क्लास. ये कमांडो अच्छा लग रहा है. रेंज वेपन अटैक्स इन्फ्लिक्ट 10% मोर डैमेज टू द टारगेट. ओके ये परमानेंट है. ओके ये जादूगर है. टू शूट स्पार्क बॉल प्रेस डाउन टू इनपुट यू हैव बाउंड द एबिलिटी टू इट. प्रेस डाउन द इनपुट you have bound the ability to. It will make you throw ball in direction you are facing, inflicting damage to the enemy you hit. Your key region is increased by 20%. So ये Dark Souls का magician जैसा है. Melee dual wield activate 2 different one-handed melee weapon to dual wield them. Your dodge energy is reduced by 20%. तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? ओके इसमें 10% ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं और इसमें एनर्जी कॉस्ट कम है. डॉक्टर स्ट्रेंज प्लस गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी. ये तो बहुत ही गंदा लग रहा है. योर बेस आर्मर इज इंक्रीज बाय 10%. तो आई थिंक कमांडो लेते हैं. कमांडो थोड़ा कूल लग रहा है. कमांडो या डेड आई बस लग रहा है मेरे को. मर्सनरी के कपड़े नहीं अच्छे लेकिन क्लास मेरे को मर्सनरी अच्छी लग रही है. अच्छी सैबोटोर भी लग रही है मुझे. तो सैबोटोर लेते हैं बिकॉज मैंने इंटेलिजेंस और एजिलिटी और स्ट्रेंथ लिया है. तो यही दोनों का मिक्सचर सही बैठ रहा है इस वाली क्लास पे. एजिलिटी का पूरा यूज होगा. डॉजिंग होगी तो चलो स्टार्ट करते हैं. Move forward, left stick. Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. पता नहीं बाद में इसको कस्टमाइज कर सकते हैं. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. But for you, it's not only a crossroad. I am dark red as in strength and power. Color me light blue for freedom and loyalty. Through everything. So ये I think strength बढ़ाएगा और ये freedom loyalty. Dark red पे जाते हैं. Allow me to introduce myself. I'm the dark side of you. अरे देखो एक बार के लिए कुत्ता एक टांग. An echo of the balance and consequence of your actions as you move forward. Allow me to introduce myself. I am dark side of you, your inner voice to be precise, an echo of the balance and consequence of your action as you move forward. Okay, so I think loyalty वाला भी आ सकता है. You really are. Let's keep to the bright and better path moving on. Okay, तो मेरा ये साथ वाला है. ये black होगा या white ये decide करेंगे. Yourself like that. You made the right choice to begin with. Why would you? Because you can't deny what's deep within your heart. But remember, this is just the beginning of the end. Eventually, it'll be my way or the highway. Choose हो गया क्या? Automatically हो गया. lol. ये तो गलत है. मुझे black ही choose करना था. Aura somewhat dark. हेलो डिलाइट्स भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई. तो अब जाएं किस तरह? राइट इज ऑलवेज राइट. चलो फिर राइट ही जाते हैं. भालू की आवाज आ रही है. और शॉर्ट ब्लेजर वेलकम टू द स्ट्रीम भाई. कैसे हो? Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. क्या है इस गेम में भाई? अभी पता लगेगा. मैं भी पहली बार ही खेल रहा हूँ. मीट ईटर्स मीट. Do you remember the beast that shattered your family, or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. इसका हाथ इन्फेक्टेड है. मतलब रेडियो एक्टिव हो रखा है. कैसा सा?
ये पहली फाइट आ रही है शायद। लुपा लुपिन डॉज, अच्छा डॉज, ये रहा डॉज। लॉक इन कैसे होगा? R2 टू फेदर फ्लाइट। B प्लस RT टू मोंकी व्हील। अरे वाह, ये भी है। A प्लस RT टू फिनिक्स फ्लाइट। ये तो टोटल ओवरडोज जैसी है। पैंथर स्वीप X। पैरी भी है। ओ लेट हो गया। पैरी का पता नहीं लग रहा पैरी है, बहुत बहुत कम रिएक्शन है। B देन X फॉर वाइपर बाइट। A और X फॉर रैबिट्स फ्यूरी। डंडा तोड़ दिया। You better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. Live for fight another day. जिनसे अच्छी पैरी नहीं होगी। हाँ भाई ये तो है, जिनसे अच्छी पैरी नहीं मिलने वाली। इसके साउंड इफेक्ट इतने बढ़िया नहीं लग रहे, या फिर साउंड इफेक्ट की वॉल्यूम कम है, क्योंकि पैरी पे कोई साउंड नहीं आ रहा। लोडिंग। एक इस पूरी गेम में हमारा कैरेक्टर शायद बोलने नहीं वाला, सब के सब आई थिंक वही चलेगा सारा This उसमें। time, it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ये ready नरेटर ही for सारी fully स्टोरी carnage. बताने वाला है। तो मैंने एक गेम के रिव्यू में ही देखा था, तो एक बार ना मैं सेटिंग्स में ऑडियो सेटिंग पहले देख लेता हूँ। सब तो 100 ही है, तो ये ऐसा ही है। रेस ड्राइव मारनी थी यार, क्या कर रहे हैं नूब। रॉकेट जैसा है वो। हाँ रॉकेट जैसा है। एस्केप द एक्सप्लोजन। The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Evolution gone wrong. Move towards the enemy target to target them with melee attacks. Aim camera towards the enemy to target them with ranged attacks. Reload your ranged weapon RB. Key energy is used for dodging, using mutation and performing special attack. When you are out of key energy, you will be unable to perform this action. Your key energy regenerates both in and out of combat. Okay, so ये लॉक ऑन अपने आप ही कर रहा है। सर्कल से डॉज था ना। हाँ मेरा थोड़ी ज्यादा साउंड होनी चाहिए थी। अभी मेरे को पता भी नहीं लग रहा कि मैं इनको काट रहा हूँ। Slice and dice. इसमें स्पाइडरमैन की तरह ऊपर एक वो आ रहा है, मार्क बना हुआ कि पैरी विंडो क्या है वगैरह एंड ऑल, तो इसका आ रहा था। पता नहीं किलिंग ब्लो है इसमें, नहीं है। टूम रेडर सही में ये कटेगा। पर साउंड इफेक्ट पे इस गेम को काम करना चाहिए था। गेम वैसे तो अच्छी लग रही है। कितना कार्टूनिश है ये गेम। हाँ इलेक्ट्रिसिटी मॉड्यूल रेयर 40 लेवल का है सीधा। बजिंग और डिसेंट 4। यू फाउंड अ वेपन स्पेशल इफेक्ट एड ऑन, अटैच इट टू योर रेंज वेपन टू गिव इट एक्स्ट्रा डैमेज टाइप
for as long as the ammo lasts. For some elements have resistance or weakness to different weapons special effect. Use them wisely. तो इलेक्ट्रिक डैमेज करेगी अब मेरी गन. इसका स्लो मोशन चूतिया कटेगा. To attach the special effect add-on, select it through consumable quick menu. Open the menu to hold. Okay. Consumable menu है ना, तो ये ऊपर की होगी. ये रहा इलेक्ट्रिक मॉड्यूल. ओके, यूज कर लिया. मेरे पास एमो लिखे आ रहे हैं, उसके अंदर कितने एमो यूज होने वाले हैं. ये हेल्थ है शायद. You found medic supply. Bags like this contain items that will help heal you. Okay. Your health doesn't automatically regenerate in combat. You have to use consumable or find other ways to heal. तो आउट ऑफ कॉम्बैट में हील होता हूँ. 5 सेकंड तक की रीजनरेशन. यू कैन यूज अ बैंडेज बाय होल्डिंग क्विक सिलेक्ट मेन्यू इनपुट एंड सिलेक्टिंग इट. अप का बटन है और वो रही मैं यूज नहीं कर रहा, वेस्ट हो जाएगी. तो मेरे पास 2 रास्ते हैं. ऊपर चेन का तो मेन ऑब्जेक्टिव है. यहाँ पे देखते हैं क्या है. छिपा रास्ता. ये क्या कर रहा है टॉयलेट सीट पे? पॉटी करेगा? अरे भाई साहब, ये अंदर कहाँ से मिली इसको? इसके अंदर कौन डाल के गया था? ये भाग बहुत फास्ट रहा है यार. थोड़ा तो स्लो होना चाहिए बंदे को. जगह भी देखने को नहीं मिल रही. उसकी आवाज आ रही है अपने ग्रास ऊपर की. ये रहा. पता नहीं साथ चलेगा नहीं चलेगा. The oil sludges everywhere. To most, it only means death. Okay, मेरे जैसे भी Some हैं. have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. गोलियां मार रहे हैं यार. Remember to parry enemy attacks. When the enemy attack, you see the lightning bolts flashing above their heads. Press LB. क्लिंक की आवाज आती है बस एक. ओके, ये रहा फिनिशर है. उसके बाद दोबारा LB दबाओ तो वो एक फिनिशर सा मार रहा है. Cutting edge. अब ये मर गया. आई थिंक ये तभी आता है जब बंदा मर जाता है. इस वाले पे बन के नहीं आ रहा, बड़े वाले पे कि अटैक करने वाला है. अच्छा, ये वाला वीक है. इसके बगल में भी वो बिजली बन के आ रही है ताकि हमको पता लगे कि ये बिजली से वीक है. अच्छा नहीं, वो इलेक्ट्रिक का ही आ रहा है. अरे जब तक इन बंदों पे लाल नहीं बनाते तब तक मैं, अरे भाई साहब, तब तक मेरा वो मिस होएगा. Fallen enemies can often be looted for healing items. Find a highlighted fallen enemy and then press Y. Remember, use your healing items when you are wounded. To open items selection, hold up. Health regeneration item ही दिया है. Okay, so outside combat I think heal होना चाहिए, पर आई डोंट थिंक हो रहा है. धीरे धीरे हो रहा है. तो ये 2 सेकंड का हील देगा लेकिन 225 का देगा. ये 50 है तो ये छोटा वाला यूज कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी हील हो जाएगा. यहाँ तो जा नहीं सकते, वहाँ पे रेडिएशन का मतलब डेंजर का साइन बना हुआ है तो डेफिनेटली मरेगा. प्यू प्यू. इससे अच्छा वेयरवुल्फ है भाई. वेयरवुल्फ गेम है क्या ये? डिफीट रॉका बूम. हर बात पे बॉस ही आ जा रहे हैं. भैया पटाखे बॉम्ब सब फेंके जा रहे हैं हम पे. इसमें कैमरा एंगल भी बड़ा ऑड है.
मतलब कैमरे का सारा सिस्टम इस पे लॉक ऑन ही नहीं कर रहा वो बंदे पे। आई थिंक मेरे को जब ये उठाता है तो इसके मुंह पर ही फोड़ना है। भैया उसको मारो तो ये उठा के पटक देता है। हाँ उस पे आ रहा था एम करने का, तो जैसे ही ये उसको उठाएगा डब्बे को तो मुझे डब्बे को इसके ऊपर फोड़ना है गधेड़े के। क्या आया? That paid off. कहाँ से पेड ऑफ? मिला ही नहीं, उस पे लॉक ही नहीं कर रहा। अब किया। उसका डब्बा ही ऐसे ही नीचे गिर गया। Chop it up. ये पता नहीं क्या मिला है। वेस्ट क्लिंक एनर्जी रीजनरेशन, ये शायद की बढ़ाएगा मेरी। तलवारों की आवाज बस कम आ रही है, इस वजह से ना पता नहीं लग रहा, कुछ एक्शन वाला फील नहीं आ रहा इस गेम में। स्वॉर्ड में चला रहा हूं तो उसकी आवाज बस इतनी ही है, चाहे बंदे को लग रही हो चाहे ना लग रही हो। आई थिंक यहाँ एक और बॉस होगा। Defeat Iron Wall. Some enemy carry large shield. You need to break the shield with melee attacks before you can deal damage to the enemy. उसके पास शील्ड होगी फिर। हैं सारे ही रकून, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ओके बुलेट्स नहीं पड़ने वाली इसको ऐसे। ओह नीचे से निकल गया। बड़े एनिमीज पे वो बिजली नहीं बन के आ रही, उठा के पटक देते हैं साले। अच्छा इसमें नॉर्मल बुलेट एमो के लिमिट नहीं है। हेल्थ रीजनरेशन ही मिला दोबारा से। Defeating enemies and completing quests will give you XP. Leveling up allows you to raise one of your attributes by 10. You'll get 1 point that you can use to unlock skill in Wung Fu and perks menu. To go to menu, press start. Okay. Level up. Hello Dragon Stack भाई, welcome to the stream. तो वाइटैलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ में मेरा आर्मर और मेले डैमेज दोनों बढ़ेगा। इसमें इंटेलिजेंस, एजिलिटी, करिश्मा, लक, स्ट्रेंथ बढ़ा है। स्ट्रेंथ तो वैसे अभी सही है, हेल्थ भी आई थिंक अभी सही है। इंटेलिजेंस की अभी ज़रूरत नहीं है, एजिलिटी की भी नहीं पड़ रही। एक लक बढ़ा लेते हैं, अच्छे ड्रॉप्स मिलेंगे। You learn upgrade points when leveling up. These can be used to acquire new special attacks and perks. Time to unlock the first special attack. Close combat या ranged? तो close combat ही देखते हैं। Unarmed one hand slash dual wield melee. तो मैं dual wield weapon ही ले रहा हूँ, तो dual wield melee का देखते हैं।
अनस्टॉपेबल पिग, स्क्वायर स्क्वायर वाई। ओके सो ये मेरे पास ऑलरेडी हैं कुछ कुछ, सिर्फ एक्स, सर्कल एक्स, ये वाले तो दिखाई दिए थे। एक ये वाला है अनस्टॉपेबल पिग, तो ये अनलॉक कर लेते हैं। वन हैंड भी है, बट वन हैंड वेपन अभी मेरे पास है नहीं, आई थिंक बाद में मिलेगा। अभी डुअल बिल्डिंग कर रहा हूँ, सो यही यूज़ करना चाहिए। वंस यू हैव मोर अपग्रेड पॉइंट्स रिमेंबर टू स्पेंड देम ऑन पर्क्स एंड स्पेशल अटैक इन वुंग फू एंड पर्क मेन्यूज। ओके, वुंग फू मेरा स्किल है। पर्क्स क्या है? पर्क, अच्छा ये अलग है, वुंग फू अलग है, पर्क अलग है। अभी भी चेक किया, फिटगर्ल पे आ भी गया है। अरे बायोम्यूटेंट का लॉल। ये क्या है? अच्छा गियर भी पहन सकता है ये। सो अभी फिलहाल मेरे पास कुछ है नहीं। हुड जैकेट ऑलरेडी पहनी हुई है। ओके सो यहाँ से गियर चेंजेस हैं। कोई बात नहीं यार, पहली बार थोड़ी हुआ है। सब हेल्थ रीजन ही दे रहे हैं, कोई अभी तक वेपन तो मिला नहीं है। ये मजेदार नहीं लग रही है इतनी। रनिंग अच्छी है, रकून जैसी। Look, an emergency box from the once was. A rare sight. अच्छी नहीं है, अच्छी है लेकिन मतलब वैसे तो ठीक लग रही है, बट प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि मज़ा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जब फाइट हो रही है ना तो साउंड इफेक्ट ऐसे नहीं लग रहे कि अच्छी लड़ाई हो रही है। आई थिंक मेरे को एक और वेपन मिला है, तो मैं एक बार चेक करता हूँ। हाँ, Dust it off and start cutting. आई डोंट नो ये चेंज क्या हो रहा है इसमें। है तो सेम ही, दोनों ही सेम है। अभी कुछ क्रैंक सा मिला था। इंटरैक्ट लॉग्ड, अच्छा की आइटम था वो, मुझे लगा वेपन है। अच्छा ऑफ हैंड मेन हैंड, दो हाथ है ना मेरे पास, डुअल बिल्डिंग है। ओके, अब ये क्रैंक से खुला है, लेकिन खोला इसने हाथ से ही है। That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. अच्छा अच्छा, ये यहाँ यूज हो रहा है। Whoa. It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. रैबिट स्लीप, डबल जंप है। अच्छा नाइस। ये आई थिंक कोई रेडियो एक्टिव जोन है। प्लांट है मारने वाला है यहाँ पे, देख के तो वही लग रहा है। The morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being. You're on your way to performing special attack. Possible special attack are prompted on the lower right hand corner of the screen. Pressing the indicated button while it is shown will trigger your special attack. Being when Okay. absorbed, including you. आया था बट आई डोंट नो, मैंने दबाया भी था। अनस्टॉपेबल पे दबाया तो था मैंने। आप मारा इसने।
ये तो मैंने अभी खोला है ना, लेकिन सिर्फ गन की आवाज ठीक है, ब्लेड्स की आवाज अच्छी नहीं डाली इन्होंने गेम में। सार्थक बटे क्या हाल है भाई के? बढ़िया भाई, तुम सुनाओ। यू कैन यूज द बायोलॉब्स टू अनलॉक स्पेशल पावर एट एनी टाइम्स बाय एक्सेसिंग म्यूटेशन पार्ट ऑफ द मेन्यू। That's sure to be useful. तो बायो पॉइंट्स मिले हैं, आई थिंक ये कैरेक्टर में ही होगा। Go to the mutation tab to unlock PSI powers, biogenetics and upgrade your resistance. Okay, ये रहा म्यूटेशन टैब, उसमें बायोजेनेटिक्स बोला था इसने। मौत माउथ, ओके, मुंह से जहर निकालेगा ये। अभी तो तेजाब वाली चीज़ें मिली हैं। PSI पावर्स का अलग है और रेजिस्टेंस भी बढ़ा सकता हूँ, तो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। तो मैं या तो रेजिस्टेंस बढ़ा सकता हूँ या फिर उससे एबिलिटी खोल सकता हूँ। अबे ये तो एवेंजर्स वाला रॉकेट लग रहा है। हाँ, वो गेम ऐसी ही बनाई है इन्होंने, पंगा है। अभी मैं कुछ करता नहीं, अभी एबिलिटी खोलता नहीं है, पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ेगी। सो अभी तक कोई ढंग की एबिलिटी मिली नहीं है। ये टूटेगा क्या? इसको अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होता। Careful of rope burns. Those burn. इस साइड में कुछ भी नहीं है। इसमें एक अपडेट आना चाहिए साउंड इफेक्ट्स का, मज़ा नहीं आ रहा साउंड इफेक्ट्स की वजह से। यहाँ कुछ भी नहीं है, बट यहाँ से कुछ विजुअल दिख रहा है शायद। आई थिंक ये एरिया पे मैं आ चुका हूँ। ये पुराना एरिया दिखा रहे हैं या फिर आने वाला एरिया दिखा रहे हैं? मैप। Toxanol built vessels called Blueprint arcs to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single arc they left behind that we know other arcs traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. ये क्या है? Puzzles. You found a puzzle. These scattered around the world. Some open new paths, while other feature different rewards. To switch the node is selected. To switch which node is selected, use left stick up down. Left stick up down. Rotate nodes plus LBRB. This is the number of rotation you have left. The higher you intellect, the more moves you have. Each node has certain positions. It must be rotated in 2 to complete the puzzle. Running out of moves before that may have consequences. Okay. तो मुझे करना क्या है फिलहाल? मूव लेफ्ट 10 है मेरे पास, मुझे इसको रोटेट करना है। फाइन, सो ओके। Just a few moves left. Make them count. ये तो अजीब सी लग रही है गेम, बस कोई बस सिमुलेटर स्ट्रीम करो भाई। There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right, but no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated.
It would never be the गजब same मारी है again, डरने and what remained of it became ours. तू बेटा जीओटी देख कौन से सीजन पर है तेरा खत्म नहीं हुआ अभी तक लास्ट सीजन होगा तेरा Sound of spark metal going ये क्या pew, फ्यूचर pew दिखा is रहा है क्या nothing हाँ but भाई thing. It's coming from behind that door. A warning label. The box looks like a potential brain melt. अच्छा मेरे को ये वाला एरिया दिख रहा था यहाँ से It's going to take a bit of puzzling to short circuit the door. ये पजल्स इतना मुश्किल नहीं है बस वही लेफ्ट राइट का ध्यान रखना पड़ेगा रोज बस थी उसमें रोज कौन रोज मुझे याद नहीं आ रही यार पाजी भी लाइक मस्त मस्त रोज लगती थी perfectly countering an enemy attack will stun them and stun enemy has star circles above their head and after hitting enemy again you can launch it up in the air by pressing LB ये तो मैं पीछे कर ही The रहा हूँ wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. ओके इसकी हेल्प करनी है So much damage. Swoon. मारना उसको था और पड़ उसको गई Shot. अकेला है पर मार बहुत रहा है ये अनस्टॉपेबल बस वही यह फाइट में फीलिंग नहीं आ रही लड़ाई वाली सिर्फ इसके SFX की वजह से That's the last of them. Let's talk to the wheeled one. वो सारे तो खड़े होके खा कर रहे हैं नहीं यार मार भी रहे हैं वो ऐसा नहीं है वही है ना पता नहीं लग रहा कि वो मार भी रहे हैं हेल्थ और की रीजनरेशन के ही आइटम मिले हैं और ये भाग कहाँ गया व्हील चेयर वाला वहां पे आइटम पड़ा हुआ है That's the good stuff. अब यहाँ पे रस्सी भी है जिस पे चढ़ नहीं रहा है आई थिंक नहीं चढ़ सकता द हॉर फ्रॉम विंटरफेल जो किंग्स लैंडिंग गई थी अच्छा ओके Zata Geto, Befabihita, Huntukub Kirko. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. Lotulu by Mopu Far Kobi. He presents भाषा himself अलग ही as है। out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't. स्टार लगाना पड़ रहा है Kim Hoba Bekuko, he fought Mo. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. अरे पी यूट्यूब Lotulu by Ya Yumawa. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. Yayato. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. हैशटैग लिल कहाँ है आपके टाइटल में अरे यार भूल गया हूँगा हैशटैग आज सोच रहा था कुछ मिला नहीं तो मैंने हैशटैग लगाया ही नहीं हैशटैग नहीं लगाया तो फिर वहीं पे भूल भी गया लिल भी लगाना The child could have been anyone but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. Okay. तो ये हैरी पॉटर की तरह लग रहा है
Tolu keta. Ya wawan. How Looper Lupin somehow left you alive after his raid on the old village. He must have had a purpose with that. The question is, what? लुपा लुपिन Kamobe farhi. नाम भी अजीब अजीब से है. Ujbar no barke. There's no doubt you're the child, and that what Looper Lupin did to your village, your Mooma and Popsy, was the Popsy. beginning of the end. Udenu ku nunyofuka nuka nuburak. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. Tulua ba volio. It was after the attack that the unity fell apart. Your Mooma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. Bebogo kontava nuka nuburak. After the old village was destroyed and you disappeared, a struggle between the families erupted, and over time, the disciples turned against each other. Bilia and honto kontua pon levun koja. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. पास्ट आएगा लग रहा है. A new friend. By default, the dialogues are set to advance from one NPC line to the next automatically. If you want to manually advance the dialogue, you can change this in the settings. इसकी तो ज़रूरत है नहीं. Way back in the long ago. Okay, जब हम बच्चे थे तब का ही दिखा रहा है. लोमड़ी लग रहा है अभी तो फिलहाल ये हमारा कैरेक्टर. ये पॉप्सी होगा. हे भगवान. Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Mooma knows you are here. You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. पोटैटो पीपल. Magic? He claims it's just the force of life, the existence of energy, powering and connecting all things living, like the Nono. The Nono Dialogues prefer कैसे सहन to है? hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. पोटैटो पीपल के पास जाना है अभी. भागता हुआ अच्छा लगता है ऐसे. Ruffle the glittering grass. Glitter grass. ये तो ऐसा लग रहा है हंस ही रहा है. You should be proud. They don't come up for everyone. The Nono's key energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Only time will tell. At least his intention is to dedicate his life to it. He has the feeling the fate of the world depends on it. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the Nono as they become one with the tree.
You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of Ki, the primal energy. ये भाई जेंटली पकड़ रहा है, इतनी जोर की तो मार रहा है. That net like you've never done anything else. He's impressed. They're hiding in the glitter grass that mostly grows deep inside damp caves, where they draw mineral from the natural rock. One ये day, चीज skip हो जानी चाहिए जो कर रहा है. tall enough to sustain the world. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. Merge the Nono with the tree. वापस बाहर जाना. बहुत ही irritating डायलॉग है इस बंदे का जो हो कर रहा है. अभी तो छोटा सा है ट्री और बाद में गेम में बहुत बड़ा बन चुका है यही पेड़. रूट्स निकल गई. Now that you've seen the Nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the Pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's industrial advances. हमारी बात हो रही है. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live or not. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he इसका फिर भी लग रहा है कि ये remembers कुछ every बोल single रहा day he है. devoted उसका तो लग ही नहीं रहा था to कुछ बोल growing रहा the है. life. But now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that that the World Eaters arrived. The genetic evolution that occurred after the apocalypse that Toxanol Corporation inflicted on the land set the World Eaters' DNA into overdrive. Yeah, I think ये bosses हैं. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Yeah, I think main boss हैं अभी जो फिलहाल target list है हमारी. Noko has tamed the Majut and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. सब routes पर ही हैं इस पेड़ की. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf Goo all the Glide. way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast.
Mau mau alu putulua. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. Hikobe. Ifari kobo fa. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. Atu awa ya yalawa wat nawa. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. Yuba donlowa ubobo tubuko. His friends have prepared something specific for each World Eater. The Mekton, the Octopod, the Majute, and the Googlide are almost ready to ride. Atu awa ya weta gono. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. 4 bosses हैं अभी तो फिलहाल. अच्छा इसने फिर से रॉड दे दिए. Fate of the world. खाना तो बहुत पड़ा इधर. Get out of bunker 101. तो यही होगी एग्जिट. You're getting the hang of it. सो अब लॉक डोर्स खुल सकते हैं इस क्रैंक से, आई थिंक. अच्छा ये वाली रोप पे पहले जा नहीं रहा था. And the rope looks strong enough to climb. मैं पहले इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था तब करा नहीं इसने. अब तो डायरेक्ट ही चढ़ गया. पैर कैसे से हो रहे हैं इसके पोलियो की तरह. एनवायरनमेंट तो अच्छा बना रखा है. Know that the tree of life is dying. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the World Eaters. घोड़ा घोड़ा नहीं है इसमें हमारे पास. एडवेंचर बिगिंस. खरगोश की तरह जाता है. ये क्या चेक पॉइंट. A signpost maps it out for the cartographically challenged. ओके तो मैप अनलॉक इनसे होया करेगा पीले साइन से. ये कर रहा है. Let's see. इसे सुसु किए यहाँ पे. The signposts are found near locations of interest all around the world. You'll unlock a signpost when interacting with it. If you can fast travel to signpost, you can fast travel to the signpost you have unlocked by selecting it on the map. To open the map, press select anytime. तो अभी मेरे को वहां पे जाना है और अभी मैं इधर हूँ. Let's see. इसका भागना बहुत अच्छा है. घास में भाग रहा हूँ ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है आरडीआर में जैसा खरगोश भागता है और अभी कोई पेल देगा. अरे भाई साहब तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है. ये कोई लग रहा है. That must be the World Eater that chewed off Out of Date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. आउट ऑफ डेट. The World Eaters have made their marks on our world over time. उस बुड्ढे का नाम आउट ऑफ डेट है. That's not the first nor the last village it'll leave in its wake. एग्जामिन द विलेज. Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. He's heard the stories about the terror inflicted by the World Eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here. Your inner balance is two halves that completes the wholeness that flows through all things. At times you will be able to manifest your inner balance through deeds and dialogue choices. Few are those
who always act in the same manner, and our wholeness is some of the choices we make and the action we take. The balance of your actions create your aura score, which affects the dialogue with the other characters. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. Interacting with captives and PSI Shrine will award you the PSI point that you can use to unlock psionic powers. Powers can only be unlocked once you have reached the required dark or light inner balance. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. He's grateful for that. You still seem to have a spark of light in you. नमस्ते कर रहा है मैंने, लेकिन हेल्प क्या करी इसकी? That's a spark of light in you! What's there to like about light? It hurts to look at. Not as much as it hurts to look at you. Always तो एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है, तो गेम की भी दो एंडिंग होगी, एक डार्क एंडिंग, एक गुड एंडिंग. फिर उसको मार दिया. Psi point unlocked. You have gained a Psi point. Use it to unlock powers in the mutation menu. Some powers are locked by the aura score, which means that your Psi points can only unlock the powers of the same color as your current aura, or those without color. Okay. एक और Psi point unlock हुआ है, तो शायद 2 Psi point मिले हैं मेरे को. There's out of date again. He must have missed something important. Out of Date knows you'll make a better stand against the World Eaters with the support of a tribe, and there's 2 nearby. The Jagni tribe is likely to be your primary choice as they seek to become omnipresent and, most importantly, feared. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths मैप of तो the बहुत बड़ा है surf. गेम का. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. The Jagni tribe only ever had one conviction: to bring balance to the world by wiping out the weak. अरे भाई साहब. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. तो ये तो जागनी तो हमारे विलेंस को पूज रहे हैं एक तरीके Out से. of Date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. He believes the tribe Sifus, Jagni especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. He believes you share Jagni's view on the world. Regardless, Jagni would welcome someone that had helped them against the Myriad tribe. He'll be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Quest tracking. Your current and started quests are shown in the journal. See the top menu above, and you can change the quest tracked by opening the journal tab and selecting another quest. Alliance with Jagni, और ये वाले Jagni थे ना?
इस पे लिखा नहीं हुआ ना अब, लेकिन उनके बारे में। तो ये वाली पे जाएंगे हम, अच्छी वाली पे, जैगनी पे नहीं जाएंगे। Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? तो मेरे पास हमेशा ऐसा चॉइसेस आती रहेंगी। ओके ओके ठीक है, तो मैं टनल लूँगा तो मैं वहाँ जाऊँगा, ब्रिज लूँगा तो मैं जैगनी वाली ट्राइब के पास जाऊँगा। तो मेरे पास साई पॉइंट आए थे, एक बार वो देखते हैं। साई पावर्स, सो मेरे पास आग की ताकत है। टू यूज ब्लेज प्रेस डाउन इनपुट, प्रेस डाउन द इनपुट यू हैव बाउंड द एबिलिटी टू, द ब्लेज विल लॉन्च यू फॉरवर्ड एंड लीव अ ट्रेल ऑफ फायर बिहाइंड यू और है ब्लिंक। ओके ये डॉज के लिए आई थिंक यूज होगा, ये तो नॉक्टिस जैसी एबिलिटी है। तो ब्लेज मस्त लग रही है, आग वाला रकून। तो और इसके लिए लाइट 2 ही चाहिए। मेरे पास लाइट का 2 है, डार्क का 4 है। आई थिंक ये मेरे पास ही है। डार्क ऑरा नीडेड 10। ओके मेरे पास अभी डार्क ऑरा 4 है और लाइट ऑरा 2 है। और मोस्टली इधर तो ये मुझे पता नहीं किससे मिल रहा है, पर ब्लेज बहुत अच्छा लग रहा है। सो ब्लेज अनलॉक कर लेते हैं। ब्लेज मैं असाइन करता हूँ वाई पे। सो टू यूज एन एबिलिटी प्रेस द बटन इट्स बाउंड टू वाइल प्रेसिंग एंड होल्डिंग लेफ्ट ट्रिगर की। ओके अपग्रेड रेजिस्टेंस। अब हीट वाले लिए तो एक बार हीट से रेजिस्टेंस बढ़ा लेते हैं अपनी। एंड बायोजेनेटिक्स, बायोजेनेटिक्स यार समझ दिया रहा अभी बिल्कुल भी। ये भी एबिलिटी है वैसे तो। आई थिंक ये पॉइजन करेगा नॉर्मल वालों को या पागल करेगा। ओके पागल करेगा कि वो खुद पे ही लड़ने लग गए हैं। दिस विल इन्फेक्ट एनिमी स्मॉल ह्यूमनॉइड, this will infect any small humanoid enemy hit, while infected enemies will attack their allies instead. More powers for you. Okay, so इसको X पे रख देते हैं। तो ये Assassin's Creed के बिजक डार्ट की तरह है, तो जहाँ भी मारो सामने वाले को अपने ही फ्रेंड्स को मारने लग जाएगा। तो मैं मायरियट सीफू के पास ही जाता हूँ एक बार। It's unusual that natural tunnels like this still exist. Most of them got flooded. जानवर के पास आ रही है। स्टेल्थ नहीं है क्या इस गेम में? सैमुराई और वो लड़ रहे हैं अनस्टॉपेबल पे। मुझे पता भी नहीं मुझे इसको मारना था नहीं मारना था। ये भी मार रहा है मेरे को जबकि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। ये तो गंदे ही लग रहे हैं। Slash and dash. Flash the slash. वो मर गया है। मेरे को पता भी नहीं कौन सी ट्राइब है। आई थिंक ये दो ट्राइब के लोग ही लड़ रहे हैं आपस में। मुझे पता नहीं है कौन सी ट्राइब है। This area was beautiful before the tribe war began. Look at it now. It's a war zone. बैंडेज मिली है। पीछे भी था इसमें एक। भूल भुलैया बना रखी है पूरी की पूरी। अभी तो फिलहाल सीधा ही चलते हैं।
ये तो विलेज की एंट्रेंस लग रही है। इसका भागने का स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे गेम में एक ही चीज That's अच्छी the लगी मेरे को। myriad tribe's fortress. Will they be friends or foes? टेम्पल जैसा बना रखा है, ऐसा लग रहा है किसी मंदिर में आ That way गए। you'll know. ओके, ये फास्ट ट्रैवल पॉइंट भी आ गया है। भी सुसु करेगा इस पे। Let's see. तो थोड़ा फॉग तो चला गया है, बट यहाँ पे वो भूल भुलैया का नहीं दिखा रहा है कुछ भी। It's a beaten path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. ओके, सो मैंने उन्हीं की हेल्प करी थी, तो वो ब्लैक वाले दूसरे हैं। Says they're wary of strangers. They're at war. Wonders why the Sifu would want to see you, but he'll let you in and give it a try. ऑब्वियसली मैंने हेल्प करी है भाई तुम्हारी। ये राजा है। Sibi? Lapanen aginkan man. Geratna fal hutut mustugai la wude. Karap la wude. The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place. He welcomes you to the Myriad Fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was लीडर को hoping सीफू you'd बोलते हैं show up. शायद। The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. विजिलेंटी? He heard you took out of date side against the scavengers in Bunker 101. It seems you believe in helping your next, and that's something you have in common. He's convinced you've returned for a reason and is glad you chose to come here. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. My Muma. Your Muma invented Wang Fu. Originally, it consisted of unarmed combat and the 6 weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. The Sifu says it's time to set the past aside, at least for now. Unrest is sweeping the land, and there are rivals in all directions. Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. Says there has to be some dark so that light can prove its purity above it, and promises this will happen if you help them unite the tribes, defeat the World Eaters, and save the Tree of Life. Warning sets the game's end goal to save the Tree of Life. Choosing destiny for defeated rival Sifus is limited to unite or subdue. He could only hope for मतलब you to गेम do का that, एंड क्या and is होगा हमने thankful स्टार्टिंग you में know सिलेक्ट what's करना है, right. गेम की शुरुआत That's a में ही। sign of strength. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribes. The one you should coerce first is the Jagni tribe. The Myriad were placed here to fulfill a certain purpose, chosen to unite the tribes and take control of their destiny. The tribes need a firm hand guiding them into the future.
क्लैंस इसके अंडर डालनी है अब, allied with myriad. Thinking alla tu ba gala wonai. Buka mun lo sada. Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war. Gula mun You need to take the struggle to the enemy, or the enemy will bring it to you. When survival is threatened, there's no other option left but war. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. Okay, so area वाला भी है चक्कर इसके अंदर. सारी tribes हैं अलग He अलग. says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. Schleine verrotna. Even though you don't share their values, they hope you'll lead with mercy. The outcome of this war is up to you. Herim denken auf wesse aber were jonke. Kara motti. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Once you've dealt with the rivals' outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and तो ये let mini your bosses हैं kin सारे. share land again. You were all part of the same tribe once, but without your Muma there as a guide, the disciples turned on each other and formed their own tribes. Seeing you brings back his memories of the old village. कौन सा गेम है ये? Biomutant. Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. He remembers your kind and unselfish soul and can sense you still have it in you, the will to do good. Anyway, the memories you make with your family are strong and can sometimes come to life. Passing the old village on your way to the first rival outpost might help. Even though it's now a different place from a different time, it is a place that'll make you remember. Okay, तो अब old You village पे have जाना things है. to do, places to go to. ये तो I think मेरे को objective ही याद दिलाना चाहेगा. तो I think ये वाली आर्ट पता नहीं कब सीखने को मिलेगी फिर ये वाले वेपन से. अलग अलग वेपन्स आर्ट्स हैं अलग अलग विलेज की. जैसे जैसे विलेज अपने अंडर कंट्रोल में लेता जाऊंगा वैसे वैसे वेपन आर्ट खुलती जाएंगी. दवाई मिली है. इसको क्या चाहिए? Says you're a hard fellow to trust. Didn't have much else to say, so no problem. I think ट्रस्ट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तभी जाके ये वाली क्वेस्ट मिलेगी. The gatekeeper welcomes you back to the fort. ओल्ड विलेज पे जाना है. पास थ्रू द केव. Let's see. तो मैं जहाँ से आया था शायद वहीं से जाना है और इस बार अब ब्रिज पे जाके मेरे को उनके क्लैन पे जाना है. या फिर ये वही विलेज है जो टूटा हुआ था जो भी थोड़ी देर पहले रास्ते में मिला था. ये तो अच्छी चीज़ है कि इसमें बहुत टाइप के वेपन्स है. इसने इतने सारे वेपन बोले बट सबसे कूल जो लग रहा था वो नंचक से लग रहा था. ओके ये मेज वाले रास्ते से जाना मेरे ख्याल से. इधर बहुत सारे रास्ते हैं. यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है.
ओके यहाँ चेस्ट है, हेल्थ पैक। बस किसी आइटम की लिमिट ना हो, क्योंकि कई बार होता है फिर आइटम वेस्ट चले जाते हैं। पूरा ब्रिज नीचे की तरफ है, पता नहीं मैं यहाँ से ड्रॉप सरवाइव कर पाऊंगा भी या नहीं, हो सकता है मर जाए, बट पता नहीं कोई और जाने का रास्ता है भी या नहीं। रास्ता तो है, आई थिंक मैं यहीं से आया था, जो उसको मैंने देख के बोला था कि ये बड़ा सा गेट है और वहाँ से ऊपर जाने का है रास्ता। एक बार यहीं से ट्राई करता हूँ, यहाँ से ही जंप मार लेता हूँ, बस मरे ना ये। ओके, ड्रॉप डैमेज कम हो गया एंड शॉर्टकट। विजिट योर चाइल्डहुड विलेज। इसकी आवाज हमेशा आती रहती है ग्रास होपर की, लेकिन उस ग्रास होपर का करना क्या है? अभी भी आ रही है, ये बैठा, ऐसा कुछ करना तो नहीं ना? आई डोंट थिंक इस ग्रास होपर का कुछ करना है। गेम की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारे कंधे पे बैठा रहता है, पता नहीं पीछे आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता, हो सकता है कलेक्टिबल हो ये। ओके, लगता है एक और है ये। That's a mump up ahead. They were hit hard by evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurred. अरे अरे तो इनके वीक पॉइंट भी होंगे, अगर मैं एम कर सकता हूँ अलग अलग जगहों पे। लास्ट हिट इसको क्रिटिकली लग रही है, मुंह पे नहीं मार सकता। ये तो गोलियों से ही मर जाएगा इसे। अरे यार हेल्थ बहुत कम ले गया है, बहुत ज़्यादा ले गया है, और अब से था ना। इसने ये क्यों उठा रखा अपने कंधे पे? इससे तो मार भी नहीं रहा है। अच्छा, मैं जब इसके पास जाऊंगा ये सिर्फ तभी चलाएगा उसे। भाई साहब गए। इसने कुछ नहीं दिया, ये डब्बा इसी ने दिया शायद। अरे डब्बा पहले से नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैं यूज नहीं कर सकता हूँ जब तक ये था यहाँ पे। मेरा लेवल तो अप हो गया है। स्ट्रेंथ, हेल्थ, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। इंटेलेक्ट से आई थिंक मेरी गन की स्पीड बढ़ेगी, गन का डैमेज ज़्यादा बढ़ेगा, और इंटेलेक्ट अभी सिर्फ 10 ही है, इसको ही बढ़ाते हैं। New smarts for you. अपग्रेड पॉइंट्स भी पड़े हैं मेरे पास, तो वंगफू में आई थिंक यूज़ हो रहे थे। एंड इस बार रेंज में देखते हैं क्या क्या पड़ा है। रेंज तो मेरे पास सारा ही पड़ा है, मैन्यूवर्स मेरे पास सारे हैं, बेसिक मेले में सब है। रेंज कॉम्पैक्ट, गन अभी सिंगल ही कर रहा हूँ, तो क्रेन डांस है। ये क्या है? फिनिश मेले चेंज बाय फैन फेरिंगन। ओके, डॉज करके एक्स मारना है, फिर ये करना है। और अगर मैं क्लोज कॉम्बैट में जाऊँ, डुअल बिल्डिंग में जाऊँ, तो मैं अपग्रेड नहीं कर सकता। और अनआर्म्ड में, अच्छा मैं अनआर्म्ड भी लड़ सकता हूँ। अरे भाई साहब, ये तो वो है क्या कहते हैं, रॉक ली का फिनिशर।
हिडन लोटस, ये खोलता हूँ, ये बहुत कूल लग रहा है। और एक बार बिना वेपन के लड़ने की कोशिश भी करता हूँ। तो मैं कैरेक्टर पे जाता हूँ, आई थिंक मेरे को गियर पे जाना पड़ेगा, एंड इसके दोनों हाथ से वेपन्स हटा देता हूँ और ऑफ हैंड खेलता हूँ एक बार। आई डोंट थिंक अब इसके पास कोई वेपन है। नहीं, अब भी ये मार रहा है। एक जगह से हटा नहीं है वेपन। ऑफ हैंड पे इक्विप नहीं है, मेन हैंड पे इक्विप है। अब ये खाली हो गया। बैक के लिए मेरे पास कोई आइटम नहीं है, लेफ्ट शोल्डर के लिए नहीं है, हेड के लिए नहीं है, राइट शोल्डर के लिए भी नहीं है। बट आई डोंट नो, यहाँ पे ये स्टार बन के आ रहा है जैसे मेरे पास ऑलरेडी कुछ है। ओके, इन्वेंट्री में पड़ा है, कंज्यूमेबल है, ये सब कंज्यूमेबल्स पड़े हैं। सो आई थिंक दैट्स वाई इस पे स्टार आ रहा है। मुझे लगा था कुछ पड़ा होगा मेरे पास। ओके, सो मैं आउटफिट चेंज भी कर सकता हूँ। अभी तो फिलहाल मेरे पास कुछ है नहीं, नॉर्मल आउटफिट ही है। सो इसका भी कुछ काम नहीं आएगा। अभी भी गियर पे स्टार आ रहा है बना हुआ। अच्छा, ये ऑटोमेशन है, फ्लैशलाइट का काम करता है अभी ये, और अपीयरेंस इसकी यही है। फाइन, तो ये मेरे पीछे ही चलने वाली चीज़ है। वो गेम सेव कर लेते हैं एंड लेट्स प्रोसीड। ये एक और जगह आ गई। Time is lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer. फास्ट ट्रेवल पॉइंट एक और अनलॉक हो गया। तो यहाँ पे धार मार लेते हैं। फास्ट ट्रेवल अनलॉक करने का बहुत सही तरीका है। दोनों लोकेशन के बीच में ही है, तो मैं कोई भी साइड चूज करता हूँ, मेरे लिए डिस्टेंस इतना ही पड़ता As time है विलेज के लिए। passes, memories fade, and sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you'll become. This हेलो सर, story बिग is फैन। far अरे from केरस भाई, over. कैसे हो? वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। Echoes of a long-lost past, like whispers in the wind. फिर से बचपन में आ गए इसके। गुप। Here's someone who takes each day as it comes. He asks how you are today. Then he wants you to know that if you find yourself going through bad times, you should just keep going. He wonders where you've been. He hopes you've been out at the lake, practicing your swimming technique. He understands. Okay, so I one think fool's swimming heart. भी That's होएगी why इस your game में। Yuma only has वो 6 सब disciples. उसमें खेला, पूरा नहीं यार। Doing just one thing helps you आधा get more खेला है done अभी। in तो less उसके time. पहले उससे नहीं निकला था मैं, He जो thinks you should बर्फ really वाला learn एरिया था, to swim by वहां से now. भी अभी पूरा नहीं निकला हूँ। चलो स्विमिंग And सीखते हैं। he'll be honored. ये समझ नहीं आ रहा, इससे कॉस्ट्यूम पहने ये है ही है, इसके पैर ऐसे ही हैं। यू कैन स्विम इन मोस्ट waters while in very deep water you slowly use key energy and when you're out of key you'll drown. Okay, so मेरी की एनर्जी तो जा रही है अभी, बहुत तेज जा रही है। तो आई थिंक जितना डीप वाटर होगा उतनी जल्दी मेरी की एनर्जी जाएगी। He says that wasn't too bad, was it? At least I learned how not to swim. Way to go. Don't let the sound of the waves drown out your spirit. So I think जितना swim But करूंगा you need उतना जल्दी practice. होगा। Lots of practice. Great things usually happen to those who never stop trying. He hopes you'll be one of them. You just need more time in the surf. That's the only way you'll ever learn how to swim. ट्राई नराका ब्लेक यार, मुझे करनी थी वो ट्राई, लेकिन ना अभी वो आई थिंक बेटा में है, और मैंने उसके बेटा के लिए वो नहीं किया था।
रजिस्टर, तो अभी जब मैं उस पर जा रहा हूँ तो उस पर कोई भी इंस्टॉल वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा, ना रजिस्टर करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर तेरे को कोई वे पता हो उसको खेलने की तो बताना यार, यहाँ पे 3-4 लोग हैं वो भी खेलने के लिए बैठे हैं उसको। गेम तो अच्छी लग रही है। I just need more time to serve, that's the only way. I'll try harder. You can never try too hard. गेम तो बड़ी Judging इंटरेस्टिंग by लग रही है, your पबजी से तो look, बहुत बेटर लग रही है seems you वो। forgot something. コード投稿 You promised you'd train with her before the sun goes down. It's time to go. The मैंने dedication करा था to training रजिस्टर is तो है मेरे important. पास। You अच्छा, can't rely solely on the fact that क्योंकि one अब ऑप्शन foot आ ही is नहीं in रहा your उस पर blood. रजिस्टर करने का। अब पता You नहीं should गेम भी know, कब रिलीज होगी। practice makes perfect. ペンナンプーさ बाप गेम है भाई। You have हाँ to यार, keep working on उस it if you यूट्यूब want पे to be वीडियो good देख at के it. बहुत सही लग रहा था। मुझे पता था कि ऐसा सा She'll गेम see आ रहा है you सब। at the मैंने village square. 3-4 साल पहले इसका अभी रिलीज कुछ आया था, मतलब ट्रेलर वेलर आया था, तब मैंने देखा था। उसके बाद मैं इस गेम के बारे में भूल ही गया। फिर एक दिन यूट्यूब पे दिखा तो मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की तो पता लगा बेटा की रजिस्टरिंग बंद हो गई इसकी। アンソンバラカンヤーラの道路 She says that's good. With a passion for learning, you'll never cease to grow. Here's another familiar face with lots on his mind. ये कौन है? छोटा भाई? भाई मैंने ट्रेलर के टाइम पे विशलिस्ट करी थी। अरे सही है यार, तुमने तो कर दी। मेरे को तो गेम का नाम ही याद नहीं रहा था जब तक वो यूट्यूब पे ट्रेलर नहीं देखा था। Ask how you're feeling today. Being nice comes easy for him. That doesn't make it less important. He was hoping you could help him pick up some scrap for a thingamajig he's working on. हेल्प ही कर दे तो आई थिंक ऑरा मिलेगा, लाइट He's ऑरा मिलेगा। happy to hear that from someone that's a part of the coming generation. You owe it to yourself to protect the environment. You should look इसकी for डायलॉग things बहुत that गंदे हैं are यार, मतलब उनकी recyclable. आवाजें। It shouldn't take you too long to find some. अपसाइक्लिंग, ये शायद ये ऊपर है। सर्च द रबिश पाइल, तो इस पे बस ऊपर ही जाना है तो ऐसे ही मिल जाएगा। एक्स दबाना है, मैश करना है। एक और होनी चाहिए। अब ये शायद वेपन अपग्रेड Wonders वगैरह what बताएगा। usefulness you found. He says every little thing counts. He can work wonders with almost anything and asks if you know how to upcycle. That's the spirit. You can't make a difference unless you get your hands dirty. He'd love to teach you to upcycle, and the scrap you found would be a good start. अपग्रेडिंग सिखाने वाला है। क्राफ्टिंग इंट्रो। Welcome to crafting. Here you can modify existing weapon and armor, or if you are feeling creative, create entirely new weapon from scratch. With the right pieces, you can craft your own weapons. To start crafting weapon, first select the base. This identifies which kind of weapon you will craft. There are 3 different kinds of melee weapons: crush, one-handed slash, two-handed slash. Crafting handle. To continue crafting your weapon, select the handle slot. Okay. ये तो बेस टाइप है। सो बेस टाइप आई डोंट थिंक मैं चूज कर सकता हूँ इस ट्यूटोरियल में। सिलेक्ट द हैंडल यू वांट इन ऑर्डर टू बी एबल टू क्राफ्ट योर वेपन। चलो एक चीज़ तो मैं कर सकता हूँ। सो इसमें क्रिटिकल चांस बढ़ेगा, डैमेज दिखा रहा है कितना फ़र्क आने वाला है। कुछ में क्रिटिकल चांस है, कुछ में आर्मर पेयर्स है, और बहुत तरीके के हैं। आई थिंक ये वाला ही अच्छा है क्योंकि इसमें आर्मर पियर्सिंग भी है और क्रिटिकल भी है, जबकि बाकी सब में सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही है। एक चीज़ है दूसरी नहीं है, इसमें भी है लेकिन ये महंगा है, तो 880 वाले ही करते हैं। सबसे पहला है रेयरिटी इम्प्रेसिव। टू क्राफ्ट द वेपन योर वेपन प्रेस एक्स। बस हैंडल से ही हो जाएगा।
I think बन गया. You did well, but he can't help but wonder why you decided to craft a weapon. I wanted something crush. Numbers. He appreciates those able to deliver a sharp remark. He understands, but hopes you won't be needing it anytime soon. He thinks mastering the 6 weapon styles of Wang Fu is more than enough for anyone. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. It looks like she's starting to lose her patience. Yes, sir. Yeah. You know she doesn't like बहुत waiting for dialogue you. है. She wants to see you on the village square right away. Then you've got a good excuse. You share a responsibility to prevent hardship on nature and the environment. It's your future. Games dignity She से wants you to grow up and start thinking Gamers for dignity से yourself. ले लो, You वरना really need as to a friend. find yourself before she's gone. Gamers dignity साइट है क्या? मतलब फ्री में मिलेगा वहाँ से या पे करना पड़ेगा? She wants to grow up and start thinking of herself. I'll try harder. That's all she's ever asked of you, that you'll try and give it चलो your मैं देखता हूँ एक best. You बार. can't do more. स्ट्रीम बस खत्म ही होने कर रहा हूँ थोड़ी देर में. उसके बाद देखता हूँ. हो जाती है तो मजा आएगा यार. उसको स्ट्रीम करेंगे. वो गेम तो बहुत एपिक लग रही है. फ्री है. अरे सही है. Then start by meeting her on the village square and take it from there. She knows you're a free spirit, always on the move, like the wind. सर डोटा कब आओगे? बस ये खत्म कर लो, उसके बाद आधे पौने घंटे का ब्रेक लूंगा, फिर खेलते हैं डोटा. बिग फैन ऑफ गोर. They look determined. Better watch out. ओग्रे. अच्छा ओजी ओजी. He asks you to stop right there and wonders where you think you're going. ओके बुली आ गए. Are you scared of me? I'm late for training. I don't want any trouble. I don't want any trouble. That makes him wonder why you were here looking for it. There's no way they'll let you pass. He wants to know who you think you are. मजे लेते हैं. He says you're right. Nobody can tell him what he can and can't do, and that includes you. अरे लड़ाई. इसी को मारते पहले. धक्का मार रहा साला. चल. दो गए. ये भाग रहा है. अरे वाह. अच्छा एक्स दबाना था, मैं स्क्वायर दबा रहा था. लॉल. पिटाई तो मैंने करी थी इनकी भाई. बस एक वो हार गया तो इन्होंने ऐसे कर दिया यार. कमांड प्रॉम्प्ट गलत हो गई बस मेरी. She asks if you're hurt. What happened? She says it's nice of you to consider them, but they have weapon training at sunrise tomorrow, so they'll need all the rest they can get. The most important thing is that you're okay. It's time to focus on your training now. She said it before, Wang Fu will keep your body in good health, and that's how you keep your mind strong and clear. अब बस ट्रेनिंग हो जाए एक बार. ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर स्ट्रीम एंड करते हैं. Here's someone close to heart, doing what he does best. पॉप्सी. अरे यार बहुत ज्यादा डायलॉग्स हैं. Always puts a smile on your Popsy's face. He wants to know how you're feeling. हर कोई यही पूछे जा रहा है.
Sitter in Training with Muma will make you feel better. It always does. Kuali. He asks if you could help him too before you leave for training. Waxan Makalisei. He'll talk According her, to sure, in-game but you know she announcements. wants you to accept responsibility for your own actions and future. He suggests you get going and find him gadgets and ideas for how you can upcycle some old fabrics. नेक्स्ट बेटा इज इन जून. जून तो बहुत लेट है. मई जून, अरे नहीं जून तो आ ही गया. हाँ अभी तो मई चल रहा है. सर्च एंड क्लोथ पाइल भैया देख तो लिया. और भी है क्या? अब माँ फिर डांटेगी. घर से बाहर निकल नहीं सकते. अच्छा यहाँ पर भी कमरा है. हो जाता है यार. अब ये कोरोना के चक्कर में ना पता ही नहीं लगता टाइम का. जून तो बहुत लेट है. बट पता नहीं ना जून में भी कब होगा. एंड ऑफ जून वगैरह कभी भी तो हो सकता है. जरूर थोड़ी कि स्टार्टिंग में ही हो He's जून की. curious to see what you found. और कई बार क्लोज बेटा भी होता है ना. पता नहीं ओपन बेटा होगा क्लोज होगा. Manchela. Vitsit Nyavov. He's all for renewal and has even considered making the trip out into the wilds to look for a bionucleus pool and refresh his DNA. Vitsit Nyav. अब आर्मर He can बनाना work सीख रहे हैं शायद wonders ये with वाला. pretty much anything and asks if you know how to upcycle. Waxan Donya ina Mahamala. Dre. Baran Uki Mama. Says at least dirty hands are proof E3 that मेन you होगा tried, शायद. and that E3 counts. इवेंट है जून That 12 you से. failed this time doesn't mean Okay. you can't succeed the next. He says it's about time you learned how and offers to teach you, starting with the scrap you found. Gear crafting. When looting you will find add-ons. These can be crafted onto an item, increase the stats of the item. To upgrade armor and clothing with items, select a slot and add on, then press X. Okay. Sparking plug, gear bit. अच्छा ये बस एसेसरीज हैं जो कुछ ना कुछ बढ़ाया करेंगी. सो आर्मर देखते हैं किसमें सबसे ज़्यादा है. 8 आर्मर इसमें है. 8 ही आर्मर है सबसे ज़्यादा. तो ये लेते हैं. हर जगह डाल सकता हूँ. 15 आर्मर, 13 आर्मर. वाह. पिंग मी ऑन डिस्कॉर्ड व्हेनेवर यू फ्री ऑन डोटा. ओके भाई मैं पिंग कर दूंगा. 22. ये बड़े अजीब अजीब से ऐड ऑन हो रहे हैं. ऐसी स्क्रैप लग रही है बस ऊपर शरीर के ऊपर. $32. सारे आर्मर बना दिया मैंने तो. Evazilmut. Echinia. The वाह style मोदी might जी be वाह. too edgy for his taste, आ but गया looks तो sharp फिर. on you. The style might be too edgy, but it looks sharp on you. I like anti-fashion. सबके पास सबको यही बोल रहा है. Yoshka. He knows she's already proud of you and everything you've done. Badam Wagumo Nashvaya. You should take take it it with you, wear it to practice. Silogo Patinea Falish. Inta Badam. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have. बाद में आई थिंक जो बाद में आइटम बनाएगा वो बढ़िया बनाएगा. अभी तो बच्चा है तो कुछ भी बनाया जा रहा है. मुंह आएरी. अभी फिर बोलेगी फिर लेट आया है. Chialdo male canoro tono. Your Muma says it's about time you got here. Naro lote. Hopes you're as ready as you claim to be. Minalagi mamuru. Rizentele. She says she is eager to get started. You don't have much time left before the sun goes down. अच्छी खासी दोपहर तो हो रही है. But there's enough time left for repetition and you need it. Training dummies don't hit back. Anson bara. Wants you to prove that with some practice first.
अरे भाई साहब Bendrine senema. Your Muma says you did well today. She's so proud of you. Anson bara. That's all she's ever asked of you. Kanamunt puri kumbala muma. Been working on a present for you, with the help of Gizmo and Wiz. Bola kamunum rutna. Taifanamenuma. You should go see him and find out what it is. You've deserved it. Ben nampusa. Says he's always thought so well of you, just like her. ओके एक कीड़ा अब मिलेगा अब इसका वो यूज पता लगेगा अभी तो फ्लैशलाइट ही था मेरे पास तो अनलॉक फ्लैशलाइट ही है बस अच्छा कैच करना है इसको पर किससे स्क्वायर अरे बटन कौन सा दबाना है Catchy. ट्रायंगल दबाना था Gunda. Your Muma says she's never seen an apparatus as green as this little thing. It's wonderful. Beri. Figuring that out is half the fun. Kanamunta. Masamal. A piece of Scraptronics like this has built-in old-world tech that makes it a potent communication device. वॉकी टॉकी Pial tuma. It's called an automaton, and it's hardwired to your DNA. It'll follow wherever you go and see whatever you see. फिर रिकॉर्डिंग ये अच्छा डायलॉग है Rizentenda. You should think of it as watching over you when she can't. Bendrine senema. Your Muma says you look tired. No wonder. It's been a long day. Amu. Says a good rest makes you ready for tomorrow. Rest चलो बाकी and कल ही you'll find करेंगे strength for ये भी रेस्ट tomorrow. कर रहा है अपने भी रेस्ट करेंगे अभी ऐसा लगा थूकी है ये Nothing could stop Lupa Lupin from setting the world on fire. ये आई थिंक मेन विलन है Your Muma urges you to blaze a trail. A burnt kidling will learn to dread fire. अभी पता लगेगा इसको ओ, That's just adding fuel to the flames. अभी पता लगेगा इसकी आंख कैसे गई Give it a last burst and you'll make it. या 1v1 फाइट होने वाली है Your Muma says this is it. The time has come. She must fight Lupa Lupin. This time there's no escape. She can hear him coming. Asana yotutu. He wants to destroy her. The time to fight is coming whether she's ready for it or not. Bendrine senema. Vaseno kasaman baru. Whatever happens, you need to know she loves you. And everything she's done has been to protect you, your Popsy, and those she was chosen to lead. Kodotu. She tells you to stay back. This is her fight. It has nothing to do with you. History has finally caught up. Rizentenda. Anson bara. She loves how brave you are, but she can't be worrying about you while she fights. This is her fight. Here it comes. The past coming to haunt the present. अरे सीधा मेरे ऊपर ही चढ़ गया ये तो मैं हरा सकते हैं यार इसको वैसे जितनी इसकी हेल्थ जा रही है लूपा लूपिन नाम बड़ा सही है इसका माँ से ज्यादा डैमेज तो बच्चा कर रहा है माँ तो मार ही नहीं रही स्क्वायर दबाना है You पता must नहीं go यार through कमांड fire प्रॉम्प्ट हमेशा उल्टी पुल्टी to आती make है it out of here. उठा के फेंक दिया सीधा
Your moon Swimming तो says सीख ही you थी। can make it if you believe in it. Where she goes, you go. Blood is thicker than water. You're in deep surf. Don't make waves. The surf goes where it wants to go. It'll take you to the shore as long as you go with the flow. बटन तो कोई काम नहीं कर रहा, धीरे वाला ही स्विम करना पड़ेगा। ये भी पीछे पीछे आ गया। बच्चा गिर गया। तो वो डूब क्यों नहीं रहा? वो तो पानी के अंदर है इतनी देर से। तो माँ डूब गई। माँ से अच्छी स्विमिंग बच्चे को आती है। Death is not to be feared by one who has lived life with a pure heart. A अच्छा, part इसकी भी of दम घुट रहा her है। will live on in you. अरे मरा नहीं ये कुत्ता। The मारा नहीं। creature is hungry for more. ये I think Nothing final is going boss to है stand ये। in its way now. ये कुत्ता फाइनल बॉस लग रहा है। मम्मी मर गई उसकी, लेकिन पास्ट दिखा रहे हैं। पता नहीं जागेगी नहीं जागेगी, अभी तेरे क्लोज से तो दिखा रहे हैं इसको, बट आई थिंक मर गई है। अभी If a भी एक sacrifice कटसीन is made होगा for शायद someone आपका। else, it's not lost, but passed on to the next. Life must go on. Real sacrifice comes from love अच्छा, ये and बाप है इसका। necessity when all other options are exhausted. The ultimate test of conscience is the willingness to give up anything हाथ to टूट गया। save what you truly care about. अच्छा, इसी वजह से इसका हाथ बड़ा अजीब तरीके का है। What you do for yourself dies with you. What you do for your kin remains and makes पकड़ you लेगा इसको। immortal in their memory. गया बाप भी। माँ बाप तो मर गए, लेकिन आँख का नहीं दिखाया, इसकी आँख कैसे कटी। As the moment fades and is lost, the only thing that remains is loneliness. It doesn't mean you'll forget your past. It simply means you need to move on. चलो यार, पास तो हो गया। अब बाकी गेम का देखते हैं। अब कल देखता हूँ, कल लास्ट ऑफ अस से करूँगा। ये तो बड़ी अजीब सी गेम लग रही है। आई डोंट नो ये स्ट्रीम करूँगा दोबारा नहीं करूँगा, बट देखते हैं। एंड जो भी अभी स्ट्रीम देख रहे हैं, थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। और अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड टर्न दैट बेल आइकन ऑन ऑल्सो, ताकि आपको पता लगता रहे मेरी जब भी स्ट्रीम लाइव हो। तो थैंक यू गाइस अगेन फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम एंड सी यू टुमारो। टेक केयर, बाय।